Good morning, good morning. Hello everyone, good morning. So let's start today's session. Start करें आज का सेशन. Let's start today's session. So first of all, let me introduce myself. ठीक है, फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट जो बच्चे जो चैनल विजिट किए उनके लिए मैं अपने बारे में बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है संदीप चंद्राकर, माई सेल्फ संदीप चंद्राकर, एंड आई secured AI at 242 in GATE 2011. Then after that did MTech from IIT Delhi in thermal engineering, and almost 7+ teaching experience I have. ठीक है, 7+ teaching experience I have, and my subjects are thermodynamics, application part, refrigeration air conditioning, IC engine, power plant engineering, right, fluid mechanics, heat transfer, strength of material. So these are my subjects, right, these are my subjects. एंड प्रोमो कोड अगर आपको यूज करना, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो और अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो CHA10, इफ यू आर यूजिंग द प्रोमो कोड CHA10, माय प्रोमो कोड CHA10, राइट. सो अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोमो कोड CHA10, सो डेफिनेटली विल गेट दी 10% डिस्काउंट. 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा. और 10% डिस्काउंट अगर मिल रहा है आपको, तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर प्लान करते हो फॉर द 12 मंथ, राइट, अगर आप 12 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, तो आफ्टर यूजिंग द प्रोमो कोड CHA10 आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज 20,500 रुपीज. और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर प्लान करते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो इफ आर गोइंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो CHA10, इफ यू आर यूजिंग द प्रोमो कोड CHA10, सो आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 40,500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, राइट. और अभी आपके पास जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 28 अक्टूबर, ठीक है, 19 और 28 अक्टूबर से आपको न्यूज भी मिल जाए कि आपके पास जो फी है वो हाइक होगा, ठीक है. सो अगर आप इनरोल करना चाहते हो अपने आप को प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो फास्ट करिए, ठीक है. सो प्रोमो कोड याद रखिएगा CHA10, माय प्रोमो कोड इज CHA10. चलिए, नॉन स्टार्ट टुडे सेशन. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो आज के सेशन में हमको बात करना है किसके बारे में. इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, राइट. इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. so far we discuss about the Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, right. Now we will discuss the spherical coordinate system, right. So in spherical coordinate system, first of all, ठीक है, जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, जैसे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, अगर आपको समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, सपोज इन केस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, राइट, and time tau. In cylindrical coordinate system, it is a function of r, theta and phi, and time tau, right. And similarly in spherical coordinate system, that variation of temperature is function of r, theta, phi and z, right. So अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ सी in case of the Cartesian coordinate system, in case of the Cartesian coordinate system, in case of the Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system, temperature is function of x, y, z and time tau, right. In Cartesian coordinate system, temperature is function of x, y, z and time tau. In cylindrical coordinate system, temperature is function of r, theta and z and time tau, right. Now this is the spherical coordinate system. So in spherical coordinate system, the temperature is function of r, theta, phi and the time tau, right. So first of all, try to understand what is the r, what is the theta and what is the phi, right. और ये चीजें अगर हमको अंडरस्टैंड करनी होती है, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, स्पेस के साथ वेरिएशन, ठीक है,
अगर स्पेस वाली जो चीजें, इफ सपोज एक्स वाई जेड आपको समझना है और आर थीटा जेड आपको समझना होता था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो टू अंडरस्टैंड दिस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपके पास, इफ सपोज देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ सपोज देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, so in that coordinate system, how we will locate a point in a space, right? If suppose there is a Cartesian coordinate system, so in Cartesian coordinate system, what parameters are required to locate a point in a space? In similarly in the cylindrical coordinate also, and at the same time similarly in the spherical coordinate also, right? So आपको एक point अगर आपको locate करना है, if you want to locate a point in spherical coordinate, then how you can locate that point in spherical coordinate, and also what parameters are required to locate that point in the spherical coordinate system in a space. So what parameters are required, right? So सबसे पहले जो हमको पैरामीटर चाहिए होगा, that is nothing but the radial distance, right? That first parameter is nothing but the radial distance, because that sphere, if suppose, ठीक है, अगर आपको spherical coordinate को understand करना है, right? If you want to understand the spherical coordinate system, let us assume, just आप assume करिए, let us assume that there is a ball, there is a spherical ball, obviously ball is in spherical in shape, so there is a ball, that ball may be tennis ball, ठीक है, और maybe you can say that plastic ball, ठीक है, आप उसको assume करिए, टेनिस बॉल या फिर प्लास्टिक बॉल जो है उसको आप एज्यूम करके चलिए, राइट? सो सबसे पहले अगर आप देखोगे दैट रेडियस ऑफ दैट बॉल, ठीक है, रेडियस आपके पास क्या हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, द रेडियस ऑफ द बॉल में भी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दैट रेडियस, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? सो जो पहला पैरामीटर आपको चाहिए, दैट फर्स्ट पैरामीटर विच इज रिक्वायर्ड इज नथिंग बट द रेडियस, एंड जो रेडियल डिस्टेंस है और रेडियस है वो कहां से कहां वेरी करेगा, अगर आप लिमिट देखोगे तो कहां से कहां वेरी करेगा, आर का जो लिमिट होगा वो कहां से कहां होगा, दैट इज 0 टू इंफिनिटी, आर का जो लिमिट होगा वो कहां से कहां होगा, 0 टू इंफिनिटी, राइट? 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, आपके पास 30 सेंटीमीटर हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो आर का जो लिमिट होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, 0 टू इंफिनिटी, समझ पा रहे हैं? ठीक है, वो जो बॉल है, ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट बॉल, ठीक है, आपके पास जो बॉल है, आपके पास स्फेरिकल इन शेप है, वो टेनिस बॉल हो सकता है, वो जो फुटबॉल का बॉल हो सकता है वो हो सकता है, वो जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो हो सकता है, राइट? तो आपके पास क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस आपके पास चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे एक पॉइंट लोकेट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इन अ स्पेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को रेडियल डिस्टेंस जो है वो बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट पैरामीटर इज नथिंग बट द रेडियल डिस्टेंस, और यू कैन से द रेडियस, एंड रेडियल डिस्टेंस और रेडियस वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, राइट? अच्छा, व्हाट इज द सेकंड पैरामीटर? अब अगर आप देखोगे, अगर मैं एक स्फेरिकल बॉल को देखता हूं, राइट, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक स्फेरिकल बॉल को देखता हूं, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉल को अगर आप देखोगे, राइट, अगर एक स्फेरिकल बॉल को अगर आप देखते हो, चलो इधर देखिएगा, स्फेरिकल बॉल एज्यूम कर लो, या फिर एक काम कर लो, स्फेरिकल बॉल एज्यूम कर सकते हो, या फिर ग्लोब, दैट एवरीवन नोज अबाउट द ग्लोब, सबको ग्लोब के बारे में पता है ना, ग्लोब इज ऑल्सो इन स्फेरिकल शेप ना, ग्लोब इज ऑल्सो इन स्फेरिकल शेप, राइट? सो चलो एक काम करते हैं, बॉल की जगह एक काम करते हैं, ग्लोब को अपन कंसीडर करते हैं, राइट? तो ग्लोब अगर अपन देखें, सो दिस इज द ग्लोब, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ग्लोब, ठीक है? तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब पे मैंने रेडियस को फिक्स कर दिया है, मतलब रेडियल डिस्टेंस इज फिक्स, जो रेडियल डिस्टेंस है वो रेडियल डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियल डिस्टेंस आपके पास फिक्स हो चुका है, राइट? अब आपके पास समझो, अब आपको और कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होंगे, अब आपके पास और कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, तो कौन कौन से पैरामीटर और आपको चाहिए, तो उसको बताने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है? यहां पे आप समझिए कि मान लो ये जो ग्लोब है ना, इन दिस ग्लोब, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में मेरे को क्या करना है, मान लो मेरे को कोई सिटी जो है, ठीक है, कोई जो सिटी है वो लोकेट करना है, ठीक है, कोई भी आपके पास सिटी, लेट अस अज्यूम दिल्ली मेरे को लोकेट करना है इन दिस ग्लोब, अगर मेरे को दिल्ली लोकेट करना है तो लेट अस अज्यूम दिल्ली इज समवेयर, दिस इज द इंडिया ना, ठीक है, तो ये आपके पास दिल्ली इज समवेयर हियर। सो अब आप ये सोचो कि अगर मेरे को ये जो पॉइंट है, मतलब मेरे को दिल्ली लोकेट करना है इस ग्लोब में, तो मेरे को मैं कैसे गया होऊंगा, तो सबसे पहले आप ये समझो कि भाई ये आपके पास ये जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब में आप देखोगे तो आपके पास ये एक सर्कल होगा, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास सर्कल होगा, दिस इज नथिंग बट द सर्कल, दिस इज द सर्कल, ये आपके पास सर्कल होगा, एंड एट द सेम टाइम दिस इज द सर्कल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, this circle is in horizontal plane, getting my point, and this circle is in vertical plane, this circle is in vertical plane,
राइट। आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास दो सर्कल मिलेगा, वन सर्कल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सपोज अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हो, हॉरिजॉन्टली कट के अगर आप टॉप से देखोगे, इफ यू कट दी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंड आफ्टर कटिंग दी हॉरिजॉन्टली इफ यू सी फ्रॉम द टॉप, तो आपको क्या दिखेगा, आपको सर्कल दिखेगा, राइट, एंड दैट सर्कल इज नथिंग बट द सर्कल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये। एंड सिमिलरली अगर आप ग्लोब को क्या करते हो, अगर आप वर्टिकली कट करते हो, अगर वर्टिकली कट करते हो एंड यू सी फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप फ्रंट से देखते हो तो फ्रंट से अगर देखोगे तो भी आपको क्या दिखेगा, तो भी आपको वो सर्कल दिखेगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सिमिलरली एग्जांपल समझ सकते हो बॉल का, ठीक है, बॉल को अगर इफ यू कट द बॉल हॉरिजॉन्टली एंड यू सी फ्रॉम द टॉप, राइट, अगर आप टॉप से देखते हो तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, ठीक है। अगर आप वर्टिकली कट करते हो एंड व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट तो आपको क्या दिखेगा, आपको सर्कल दिखेगा। सो देयर आर टू सर्कल्स, वन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अनदर वन इज द वर्टिकल प्लेन। एक आपके पास कहां पे होगा, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, वन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अनदर वन इज द वर्टिकल प्लेन। सो ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, दिस सर्कल इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सर्कल आपके पास कहां है, ये सर्कल आपके पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दिस सर्कल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। Getting my point? And this circle is in vertical plane. This circle is in vertical plane. This circle is in vertical plane, right? So देखो यहां पे अगर हम, ठीक है, अब इसको अगर हम हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं, राइट, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, यहां पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो नो डाउट, ठीक है, अभी आप यहां से इतना अंडरस्टैंड कर पाए होगे कि टेम्परेचर जो है वो आर के साथ वेरी कर सकता है, राइट, रेडियल डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा, ठीक है। आपके पास जो ग्लोब है वो ग्लोब का डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, तो इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू आर। एंड सिमिलरली इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू दिस ये आपके पास ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के अलोंग भी तो टेम्परेचर वेरी कर सकता है। सी द टेम्परेचर वेरीज अलोंग दिस सर्कल, मतलब जो वर्टिकल प्लेन में सर्कल है ना, वर्टिकल प्लेन में जो सर्कल है, उस वर्टिकल प्लेन में जो सर्कल है उसके अलोंग आपके पास क्या कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, राइट। एंड सिमिलरली ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल है ना, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग भी आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या कर सकता है, टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर varies in vertical plane also and the temperature varies in the horizontal plane also, right। अब इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। सो अगर इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है तो सी दिस इज द ग्लोब, यही आपके पास ग्लोब है, दिस इज द z एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, सबसे पहले आपने रेडियस बता दिया कि आपके पास जो रेडियस है वो रेडियस कितना है। सो दैट रेडियस इज नथिंग बट द, दैट रेडियस इज नथिंग बट द, रेडियस इज नथिंग बट द r, दैट रेडियस इज नथिंग बट द r, दैट रेडियस इज नथिंग बट द r। ये आपके पास r है। सो r आपके पास कहां से कहां वेरी कर सकता है, दैट r वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी अब आपके पास क्या है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना, दिस इज द सर्कल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये कौन सी प्लेन का सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द सर्कल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी आपको सर्कल दिखेगा ना, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो दैट पॉइंट मे बी हियर, 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 राइट। आपके पास वो जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस एनीवेयर, इन द सर्कमफेरेंस एनीवेयर। सो इसके लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को एंगल बताना पड़ेगा, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। So at x axis that phi is 0 degree, right। और अगर आपके पास that point may be here, that point may be here, that point may be here, तो according to that, ठीक है, according to that the value of phi will change, value of phi will be change। so value of phi आपके पास कहां से कहां चेंज होगा, क्या आप बता सकते हो कि जो phi होगा वो कहां से कहां चेंज होगा? आर यू एबल टू आंसर दिस कि फाई जो होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा? सो दैट फाई विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, फाई विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। एंड सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही अगर हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, तो वर्टिकल प्लेन में देयर इज आल्सो सर्कल ना, इन अ वर्टिकल प्लेन देयर इज आल्सो सर्कल, इन वर्टिकल प्लेन देयर इज आल्सो सर्कल। अगर आप वर्टिकल प्लेन में अगर आप कट करते हो तो एंड व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट आपको क्या दिखेगा, सर्कल। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से करते हो एंड व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा सर्कल। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन वर्टिकल प्लेन आल्सो देयर इज अ सर्कल, राइट। सो अगेन सी दिस इज द सर्कल इन वर्टिकल प्लेन, सो दैट पॉइंट इज हियर, that point is here, that point is here, again that point
मे बी इन अ सर्कमफेरेंस एनीवेयर, वो आपके पास पॉइंट जो है वो पॉइंट आपके पास क्या हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सो अगर आपके पास वर्टिकल प्लेन में आपके पास उस पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है, दैट्स व्हाई देयर इज अ एंगल व्हिच इज थीटा, दैट्स व्हाई देयर इज अ एंगल व्हिच इज थीटा। सो दैट पॉइंट मे बी हियर, मे बी हियर, मे बी हियर, ठीक है, दैट पॉइंट्स मे बी एनीवेयर इन दिस सर्कमफेरेंस, राइट। दैट मींस दैट वैल्यू ऑफ थीटा चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। सो थीटा का जो आपके पास रेंज होगा, दैट रेंज ऑफ द थीटा वो कहां से कहां होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जो थीटा का जो रेंज होगा, थीटा का जो रेंज होगा वो कहां से कहां होगा, बता सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, सो ऑब्वियसली दैट थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर इन चीजों को अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, राइट, ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मैंने जो भी चीज यहाँ पे जो बताया आपको, वॉट एवर वी डिस्कस्ड इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, राइट, अगर इन चीजों को अगर आप हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो, तो मैं ये बोल सकता हूं दैट टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर वेरीज इन रेडियल डायरेक्शन, that radial direction means that temperature varies in this direction. See, that temperature varies in this direction, that temperature varies with respect to phi, that means in this direction, ठीक है, in this direction, and temperature varies with respect to theta, that means in this direction, right, and obviously with respect to time, because we are talking about the space, Rajat, because we are talking about the space, हम यहाँ पे स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम स्पेस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टू डिफरेंट प्लेन, दैट्स व्हाई देयर इज अ टू डिफरेंट प्लेन, राइट। इन इवन आपके पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, इवन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी आपने पॉइंट लोकेट करना सीखा। सो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टू प्लेन्स, वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अनदर वन इज द वर्टिकल प्लेन। इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर आप एक सिलेंडर है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ दिस इज द सिलेंडर, राइट, सी दिस इज द सिलेंडर, एंड अगर आप इसको कट करते हो, इफ यू कट दिस सिलेंडर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप, ठीक है, क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, राइट। एंड सिमिलरली इफ यू कट दिस सिलेंडर, ठीक है, वर्टिकली, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा सेमी सिलेंडर, राइट। सो वहां पे भी हमने दो प्लेन के बारे में बात किया था, वहां पे भी हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के बारे में बात किया, एंड हियर आल्सो वी डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। Getting my point? Because we are focusing to locate a point in a space, not in a plane, ठीक है, in a space, ठीक है, यहां पे हम स्पेस में लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट पॉइंट को। Getting my point? So here, ठीक है, here आपके पास क्या है, that r, theta and phi. So temperature varies with respect to r, theta, phi, and obviously that time is nothing but the tau. Is it clear to all? ठीक है, जल्दी से आप बताओ क्या ये सबको क्लियर है क्या, इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए हो, दैट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द कार्टेशियन एंड द सिलेंड्रिकल, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या इतना समझ आया है क्या आप लोगों को, ठीक है, इतना समझ आया है क्या आपको। So that temperature varies with respect to r, theta, phi, and the time tau. So this is the vertical plane circle, this is the horizontal plane circle. So temperature with respect to radius, temperature with respect to theta, temperature with respect to phi. Temperature varies with respect to theta, temperature varies with respect to phi. ओके फाइन, चलो अगर इतनी चीज आपको समझ आ गई है, नाउ अब हमको क्या लिखना है, अब हमको लिखना है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी कैन राइट द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखना है, और अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो नीड टू डिराइव इट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप जो दे वाले हो, ठीक है, आप मेंस का एग्जाम नहीं देने वाले हो डेफिनेटली, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस लेते हो, ठीक है, जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का जब आप मेंस देखते हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन, तो आपको ये चीज करना पड़ जाता है, राइट। लेकिन बट यहाँ पे आपको नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिराइव द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, राइट। सो आपका जो काम है, राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, अब देखो आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखना है, तो दैट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अब आपको समझना है कि कैसे हम लिखे। सी, सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जनरल
heat conduction equation, general heat conduction equation in spherical coordinate. General heat conduction equation in spherical coordinate, right? So first of all, see, derive कहां से होता है? तो derive कहां से होगा? That is conservation of energy or energy balance. And what energy balance says? That energy balance says the rate of energy in plus rate of energy generated is equal to rate of energy out plus rate of energy stored. सिर्फ ठीक है. So जो भी आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव होता है, ठीक है, whatever the coordinate system it is, ठीक है, जो भी आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव होता है, that is from the first law of thermodynamics, or you can say simply conservation of energy, right? So यहां से फाइनली आपके पास क्या आएगा? सी, द डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर डेल टी बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल टी बाई डेल थीटा प्लस q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा del t by del tau. So this is the general heat conduction equation in the spherical coordinate, right? So definitely याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट इतना याद रखने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, आपके एग्जाम में बड़ा सिंपल केस पूछता है, तो वो जो केसेस जो पूछता है ना, वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है. So this is the general heat conduction equation in the spherical coordinate, right? So general heat conduction equation in spherical coordinate, see, you can say here also del square t by del r square plus 2 by r del t by del r plus 1 by r square sin square theta del square t by del phi square plus 1 by r square sin theta del by del theta sin theta del t by del theta plus q dot g by k is equal to 1 by alpha del t by del tau, right? So this first two term, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास दो टर्म जो आपको दिख रहा है, this first two term, right? This first two term shows the variation of the temperature with respect to radial direction. That first two term shows the variation of temperature with respect to radial direction, right? The second term shows the variation of temperature with respect to phi. The third term shows the variation of temperature with respect to theta, right? Fourth term consider the volumetric heat generation, ठीक है, और heat generation, and that last term this term shows the variation of temperature with respect to time. Is it clear to all? Right? क्या ये सबको क्लियर है? राइट, अच्छा, अब अगर आपको ये क्लियर है तो अब आपके पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, पुट सम एजम्पशंस. यहां पे क्या करता हूं, यहां पे कुछ एजम्पशन लेता हूं, ठीक है, पुट सम एजम्पशन, ठीक, क्योंकि ये जो जब आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप लिखते हो ना, सो देयर आर ओनली वन एजम्पशन, ठीक है, यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एजम्पशन है, देयर इज ओनली वन एजम्पशन, एंड व्हाट इज दैट एजम्पशन? मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. Material is homogeneous and isotropic. So there is only one assumption. Material is homogeneous and isotropic. There is only one assumption. Getting my point, right? अच्छा, इसको अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? अब यहाँ से बताओ, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ assumption लेना है, और वो assumptions क्या क्या देखो यहाँ से, ठीक है. That first assumption is, let us assume steady state condition is here.
That first assumption is, let us assume steady state condition is here. Second assumption, no internal heat generation. No internal heat generation. That is the second assumption. Third assumption is thermal conductivity is not a function of temperature. Thermal conductivity is not a function of temperature. And that fourth assumption is nothing but the one dimensional, and in one dimensional that is in radial direction. One dimensional in one dimensional that is in radial direction, right? So यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, that general heat conduction equation is reduces into simple form. ठीक है, under these assumptions that general heat conduction equation is reduces in a simple form. And what is that simple form? That simple form is nothing but the, ठीक है, that simple form is nothing but the d square t by dr square plus 2 by r dt by dr is equal to 0. So this steady state condition है, that means this term is 0. There is no internal heat generation, that means this term is 0, right? One dimensional, that means in a radial direction only, that means these two terms are 0. ठीक है. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझना, ठीक है, आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम also you can write the Laplace equation. Also you can write the Laplace equation. Also you can write the Poisson equation, and also you can write the diffusion equation. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए. What is the Laplace equation? Steady plus no internal heat generation. Steady plus no internal heat generation. What is the Poisson equation? Steady plus with heat generation. Right. What is the diffusion equation? Unsteady plus no internal heat generation. Right. So in spherical coordinate system also, you can write the Laplace equation, you can write the Poisson equation, you can write the diffusion equation. Getting my point? And fourth is nothing but that fourth you can write one dimensional steady, no internal heat generation. One dimensional में कौन सा? Radial direction. In one dimensional, that is the radial direction, and this is nothing but the, ठीक है, this is nothing but the general heat conduction equation. So this general heat conduction equation is reduces in a simple form. This general heat conduction equation reduces in a simple form. Getting my point, right? अच्छा, अब यहां से अगर देखोगे, so क्या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, बताना. ठीक है, shall I write in this way? 1 by r square d by dr r square dt by dr. आप जल्दी से बताओ, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? Shall I write this equation in this form? Yes or no? जल्दी से आप बताओ. और after solving this, are you able to get this? After solving this, are you able to get this? ठीक है, बताइए जल्दी से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वन बाई आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू 0. सेम आ रहा है क्या अलग आ रहा है? सेम आ रहा है क्या अलग आ रहा है? देखो यहां से इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे आप लोगों के लिए, चलो यहां कहीं पे आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो जाए कोई, राइट? सो 1 by r square
and that is nothing but the r square d square t by dr square plus dt by dr, or you can say this is the 2r and dt by dr is equal to 0. So ultimately what you will get the d square t by dr square plus that is a 2 by r dt by dr is equal to 0. ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपके पास सेम आ रहा है, राइट. सो अब यहां से अगर इसको इफ यू ट्राई टू सॉल्व फर्दर, राइट, इसको अगर आप फिर से ट्राई सॉल्व करने का कोशिश करेगा तो क्या मिलने वाला है, देखो इधर ये आपके पास हो गया d by dr r square dt by dr is equal to 0, राइट. या फिर मैं बोल सकता हूं दैट r square dt by dr is equal to r square dt by dr is equal to integration constant, that is nothing but the c1. So integrate it once you will integrate, ठीक है, that r square dt by dr is equal to c1, and c1 is nothing but the integration constant, right. Now you can solve further. dt by dr is equal to c1 by r c1 by r square, sorry, c1 by r square. Now integrate once again, integrate once again एक बार फिर से इंटीग्रेट करो. सो t is equal to minus c1 by r to the power minus 2 ना, r to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So minus c1 by r plus c2 minus c1 by r plus c2. So this is the temperature. This is the temperature that T is equal to minus C1 by R plus C2, right. और मैंने आपको बताया in case of the conduction heat transfer there are two objectives. In case of the conduction heat transfer there are two objectives. That first objective is find out the variation of temperature, find out the temperature of variation, and the second is nothing but the rate of conduction heat transfer, right. So in conduction heat transfer there are two objectives. That first objective, what is the first objective? That variation of temperature. First objective is variation of temperature, find out the variation of temperature, and here it is clear that the temperature varies with respect to R only. And the second is nothing but the find out the rate of conduction heat transfer. Find out the rate of conduction heat transfer, conduction heat transfer, and that is nothing but the q dot conduction. So there are two objectives in the conduction heat transfer, right. अब आपके पास देखो, आपको ये भी चीज आपको याद रखना है ना, because this is also important for your exam. ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको यही पूछ देता है डायरेक्टली, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. सो दिस इज नथिंग बट द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन in spherical coordinate system, right. When assumptions are one dimensional, that means in radial direction only, steady state, no internal heat generation. So this is the one dimensional steady state, no internal heat generation, general heat conduction equation in the spherical coordinate, right. तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट. सो वन डायमेंशनल ही इंपॉर्टेंट है, वन डायमेंशन से ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, वन डायमेंशनल से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है, राइट. सो चलो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको, ठीक है, जो भी आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर, दैट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वो जो सारा चीज आपको फाइंड आउट करना है, वो कहां फाइंड आउट करना है, इन हॉलो स्फीयर. सो लेट अस अज्यूम देयर इज अ हॉलो स्फीयर, राइट. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू द हॉलो स्फीयर, और you can say that variation of temperature in case of the hollow sphere. So conduction heat transfer through hollow sphere, और ये जो hollow sphere आप देख रहे हैं, ये आपके पास hollow sphere दिख रहा होगा, this is the hollow sphere, right. So this is nothing but the hollow sphere, and this hollow sphere has a radius,
just take an example. This hollow sphere has a radius r1, inner radius is r1 and the outer radius is r2. Inner radius is r1, this is the inner radius, and this inner radius is r1 and that outer radius is nothing but the r2, right? And the मटेरियल, ठीक है, आपके पास जो मटेरियल है हॉलो स्फीयर का, जो मटेरियल है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द hollow sphere, the thermal conductivity of the material is nothing but the K. The thermal conductivity of the material is nothing but the K. The thermal conductivity of the material is nothing but the K. And here the temperature is nothing but the T1. Here the temperature is nothing but the T1 and here the temperature is nothing but the T2, right? जो आपके पास अंदर में जो temperature है, that temperature is nothing but the T1 and right. Here the temperature is nothing but the T1 and here the temperature is nothing but the T2. So at R is equal to capital R1, that boundary condition, this is a boundary condition also, right? At small r is equal to R1, that T is equal to T1, and at small r is equal to R2, that T is equal to T2, that T is equal to T2. At small r is equal to R1, T is equal to T1, and small r is equal to R2, T is equal to T2. क्लियर है सबको ये, राइट? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अगर समझना है कि आपके पास T1 जो है, that T1 is greater than T2, that T1 is greater than the T2, T1 is greater than T2, right? So at R is equal to capital R1, T is equal to T1, at R is equal to R2, T is equal to T2, at any radius R, and at any radius R, at any radius R, that temperature is, at any radius R, temperature is let us assume T. और यही हमको पहले फाइंड आउट करना है कि द टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू R, हाउ द टेम्परेचर विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू R, यही आपको फाइंड आउट करना है, राइट? सो एट एनी रेडियल डिस्टेंस R, सो let us assume this is the radial distance R, let us assume this is the radial distance R, and corresponding to this radial distance R, that here temperature is nothing but the T, here temperature is nothing but the T, and this radius is nothing but the R, this radius is nothing but the R, right? So कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. So let us assume this is the equation number A. This is the equation number A. So from equation number A, that T is equal to minus C1 by R plus C2. Minus C1 by R plus C2, right? Now use the boundary condition. These are the two boundary condition. Use these boundary condition and find out the value of C1 and C2. Use these two boundary condition and find the C1 and C2, right? So first boundary condition, at R is equal to capital R1, T is equal to T1. So T1 is equal to minus C1 R1 plus C2. So this is from first boundary condition, and from the second boundary condition, T2 is equal to minus C1 R2 plus C2, right? So this is the equation number A, this is the equation number 1, and this is the equation number 2. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. So from equation number 1 and equation number 2, so from equation number 1 and equation number 2, from equation number 1 and equation number 2, find out the C1 and C2. Find out the C1 and C2. क्या C1 और C2 आप find out कर पाओगे? Are you able to find out the C1 and C2? Please tell me yes or no. Please tell me yes or no. क्या C1 और C2 जो है वो find out कर पाओगे या नहीं find out कर पाओगे? आप C1 और C2 find out कर पाओगे, ठीक है? So find out करके देखना. And after getting the value of C1 and C2, put this value of C1 and C2 in this equation number A. ठीक है? C1 और C2 की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर A में. So इक्वेशन नंबर A में पुट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? Put the value of C1 and C2 in equation number A, right? इक्वेशन नंबर A में आप पुट कर देंगे. So after putting C1 and C2 in equation number A, what you will get? You will get T minus T1. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ना, T minus T1 upon T2 minus T1, and this is equal to 1 by R minus 1 by R1
divided by 1 by R2 minus 1 by R1, 1 by R1, 1 by R minus 1 by R1 upon 1 by R2 minus 1 by R1, right? And from here क्या समझ आ रहा है यहां से आपको, that t is equal to यहां से अगर देखोगे, so this is t1 plus t2 minus t1 multiplied by 1 by R minus 1 by R1 divided by 1 by R2 minus 1 by R1, राइट? एंड व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन इट इज, ठीक है? यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर है कैसा दिख रहा है आपको, टेम्परेचर जो वो कैसा वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, कैसा दिख रहा है आपको? जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, बताइए कैसा वेरी कर रहा है? ठीक है, बताइए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, बताइए क्या कमेंट करोगे आप? टेम्परेचर जो है वो आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है? ठीक है, टेम्परेचर आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है? सो टेम्परेचर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू आर हाइपरबोलिकली, hyperbolic variation, hyperbolic variation, hyperbolic variation. This variation is nothing but the hyperbolic variation. Getting my point? So यहाँ पे आपके पास in case of the spheric, in case of the hollow sphere, in case of the hollow sphere that variation is hyperbolic. In case of the hollow cylinder variation is logarithmic. In case of the hollow cylinder that variation is logarithmic. In case of the hollow sphere that variation is hyperbolic, right? So यहाँ पे वेरिएशन आपको शो करना है, तो आर यू एबल टू शो इट? चलो शो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज T2, दिस टेम्परेचर इज T2, दिस टेम्परेचर इज T2, and this temperature is nothing but the T1, right? So this is the variation, this is the variation, and this variation is nothing but the hyperbolic variation. This variation is nothing but the hyperbolic variation, hyperbolic variation. This variation is nothing but the hyperbolic variation. Is it clear to all? Is it clear to all? क्या सबको क्लियर है ये, राइट? चलो, अब आपको क्या मिल गया? आपको टेम्परेचर का वेरिएशन मिल गया। द टेम्परेचर, आपको वेरिएशन फाइंड आउट हो गया। द टेम्परेचर वेरिएशन इज हाइपरबोलिक वेरिएशन। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड। जो फर्स्ट टास्क था, दैट फर्स्ट टास्क इज कंप्लीटेड, फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू आर। सो दैट फर्स्ट टास्क इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड टास्क, व्हाट इज द सेकंड टास्क भैया? व्हाट इज द सेकंड टास्क? दैट सेकंड टास्क इज नथिंग बट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द hollow sphere, rate of conduction heat transfer. That second objective is nothing but the find out the rate of conduction heat transfer from the hollow sphere. So this is the hollow sphere, this is the hollow sphere, और ये जो hollow sphere है, इस hollow sphere को आप क्या बोला था? ये आपके पास सेंटर है, this is nothing but the center, this is nothing but the center बाबू, and this is the radius r1, this is the radius r1, this is the radius r2, this is the radius r2, right? And this is the any radius r, this is the any radius r, right? So this is the radius r1, this is the radius r2, and this is nothing but the any radius r, this is nothing but the any radius r, right? Or at any radius r, consider an small element having thickness dr, right? So at a radius r, at a radius r, consider a small element, of thickness dr. So that thickness of this small element, element is nothing but the dr. That thickness of this small element is nothing but the dr. Right? The thickness of this small element is nothing but the dr.
राइट। सो अगर आपके पास ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इफ यू सी दिस स्मॉल एलिमेंट, इफ यू सी दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ये जो स्मॉल एलिमेंट का ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, ये पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं क्या करता हूं, आपको जूम करके दिखाता हूं, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन इज जूम। सो अगर आप जूम करके देखोगे तो कैसा दिखेगा, सी, ये हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस आर, this is the radius r, this is the radius r, and thickness, that thickness is nothing but the dr. So this is the radius which is nothing but the r, that thickness is nothing but the dr, and here let us assume the temperature is nothing but the T plus dt, here the temperature is nothing but the dt plus dt, or here temperature is nothing but the T. So temperature difference across this small element, the temperature difference across this small element is nothing but the dt, right? So यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, the thickness is there and the temperature difference across the small element is dt, across the small element is dt, right? So ये जो आपके पास यहाँ पे small element दिख रहा है, so what is the rate of heat transfer from this small element? What is the rate of heat transfer from this small element? So let us assume the rate of heat transfer from this small element, the rate of heat transfer from this small element is nothing but the dq dot, right? And what is the dq dot, bhai? From the Fourier law of heat conduction, from Fourier law of heat conduction, from Fourier law of heat conduction, from Fourier law of heat conduction, that dq dot is nothing but the minus k a dt by dr, माइनस के ए डी टी बाई डी आर, यही होगा, ठीक है। सो यहां से आपके पास, ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हियर टेम्परेचर इज नथिंग बट द T1, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज हियर T1, हियर द टेम्परेचर इज नथिंग बट द T2, and definitely the T1 is greater than, T2. So from here the rate of conduction heat transfer, is nothing but the Q dot conduction. So from here the rate of conduction heat transfer is nothing but the Q dot conduction. T1 is greater than T2, right? So what is the relation between the dq dot and Q dot? Once again I ask you, what is the relation between the dq dot and the Q dot? क्या relation होगा dq dot और Q dot में, बताइए? What is the relation between the dq dot and the Q dot? What is the relation between the dq dot and the Q dot? What is the relation between the dq dot and Q dot? क्या relation होगा बताओ? जो बच्चा पहले से क्लास अटेंड करते आया है वो जरूर आंसर कर पाएगा इस क्वेश्चन का। Yes, it is a type of series connection only. सेम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेम होगा। सो इंस्टेड ऑफ द डी क्यू डॉट, राइट, लिखना चाहो तो आप क्यू डॉट भी लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ द डी क्यू डॉट यू कैन राइट क्यू डॉट ऑल्सो। क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के। नाउ व्हाट इज द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन हीट ट्रांसफर? व्हाट इज द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन हीट ट्रांसफर? व्हाट इज द एरिया? नाउ चलो बताइए क्या होगा एरिया? व्हाट इज द एरिया? व्हाट इज द एरिया? एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन हीट ट्रांसफर, बताइए कौन सा एरिया होगा? What is the area responsible for the conduction heat transfer? What is the area responsible for the conduction heat transfer? What is the area responsible for the conduction heat transfer? Obviously that surface area, ठीक है, जो भी आपके पास conduction heat transfer होगा, whatever the conduction heat transfer occurs from the sphere, from the surface only, ठीक है, from the surface area only, so that is nothing but the 4 pi r square, that is nothing but the 4 pi r square. That is nothing but the 4 pi r square, right? So 4 pi r square and dt by dr, right? So q dot divided by r square dr is equal to minus k into 4 pi, and that is nothing but the dt. Now integrate it. So what is the limit now?
व्हाट इज द लिमिट, क्या हो जाएगा लिमिट देख लो, व्हाट इज द लिमिट. सो इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो व्हाट इज द लिमिट, what is the limit? So limit is nothing but the from R1 to R2, from R1 to R2, and corresponding to R1 the temperature is nothing but the T1, and corresponding to R2 the temperature is nothing but the T2. Corresponding to R1 the temperature is T1 and corresponding to R2 temperature is T2, right? So Q dot is constant now, that Q dot is constant, bahar nikal lo, Q dot is constant, right? Now integrate it, so R to the power minus 2 plus 1, minus 2 plus 1, minus 2 plus 1, right? R1 R2 is equal to K constant बाहर निकाल लो, minus K 4 pi T2 minus T1, T2 minus T1, T2 minus T1. So from here what you will get, you will get the ये हो जाएगा आपके पास minus, that is nothing but the minus Q dot, and that is nothing but the 1 by R. So this is 1 by R2, 1 by R2 minus 1 by R1 is equal to minus 4 pi K T2 minus T1, T2 minus T1, T2 minus T1, right? So solve it further. So that is minus Q dot, minus minus plus na, minus plus. So Q dot Q dot 1 by R2 minus 1 by R1 is equal to 1 by R2 minus 1 by R1, 1 by R2 minus 1 by R1, 4 pi K T2 minus T1. So shall I write in this way also? K, right, 1 by R1 minus 1 by R2 is equal to, that is 4 pi K T1 minus T2, right? So solve it, Q dot, and that is nothing but the R1 R2 minus R1 is equal to 4 pi K T1 minus T2. So from here you will get the Q dot is equal to, that is a 4 pi K R1 R2, 4 pi K R1 R2 T1 minus T2 upon T1 minus T2, 4 pi K R1 R2, 4 pi K R1 R2 T1 minus T2 upon R2 minus 1. And this is nothing but the rate of conduction heat transfer from the hollow sphere. This is nothing but the rate of conduction heat transfer from the hollow sphere. This is nothing but the rate of conduction heat transfer from the hollow sphere, right? So थोड़ा सा इसको अरेंज करो, ठीक है? Arrange this mathematical expression like this. Arrange this mathematical expression. So that is Q dot is equal to, that is T1 minus T2 upon R2 minus R1 upon 4 pi K R1 R2, right? And compare this mathematical expression with thermal resistance concept, ठीक है? thermal resistance का concept use करो. So thermal resistance का जब आप concept देखते हो, from the thermal resistance concept, that Q dot is equal to, that is nothing but the delta T divided by thermal resistance na? Thermal resistance, or you can say this is simply T1 minus T2 divided by thermal resistance na? Thermal resistance. So this is the, let us assume this is the equation number, let us assume this is C, and this is the equation number, let us assume D. So from C and D, that thermal resistance in case of the hollow sphere, that is nothing but the R2 minus R1 upon 4 pi K R1 R2. So this is very important. That thermal resistance in case of the hollow sphere
that thermal resistance in case of the hollow sphere is nothing but the R2 minus R1 upon 4 pi k R1 R2, 4 pi k R1 R2. This is very very important. क्लियर है पॉइंट, राइट? सो दो चीजें निकालना था. अब यहां से अगर आपको देखो थर्मल रेजिस्टेंस याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिमेंबर द थर्मल रेजिस्टेंस in case of the hollow sphere, that is more important rather than the q dot, right? Because once you know the thermal resistance in case of the hollow sphere, definitely you will get the q dot. आपको q dot आसानी से मिल जाएगा, because q dot के लिए क्या कर रहा है, that q dot is nothing but the delta t t1 minus t2 divided by thermal resistance. So thermal resistance आपको याद रहना इंपॉर्टेंट है. thermal resistance आपको पता होना चाहिए that r2 minus r1 upon 4 pi k r1 r2. Getting my point? So far यहाँ तक आपको सारा चीज क्लियर है? सारा चीज क्लियर है? कोई भी डाउट? सारा चीज आपको क्लियर है? कोई भी डाउट? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था, ठीक है? आपके पास एक मेथड और है. देयर इज अनदर मेथड आल्सो. देयर इज अनदर मेथड आल्सो फ्रॉम वेयर यू गेट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, राइट? इन केस ऑफ द सिलेंडर में भी आप ऐसा करके फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. देखो अनदर मेथड, सेकेंड मेथड, दैट सेकेंड मेथड, या आप सिलेंडर में भी लगा सकते हो ना. सिलेंडर के केस में भी एप्लीकेबल, दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर आल्सो. दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर आल्सो. दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर आल्सो, राइट? सो यहां से अगर देखोगे दैट फ्रॉम द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन दैट q डॉट इज इक्वल टू माइनस के a dt by dr, माइनस के dt by dr, and what is the t? The t is equal to that is nothing but the t is equal to that is t1 plus, ठीक है? that t is equal to, यहां पे आपने लिखा था that t is equal to t2 minus t1, that t is equal to t1 plus t2 minus t1 1 by r minus 1 by r1 divided by 1 by r2 minus 1 by r1, right? So that q dot is equal to minus k into a into d by dr. This is t1 plus, t की जगह रख दो t1 plus t2 minus t1 multiplied by 1 by r minus 1 by r1 upon 1 by r2 minus 1 by r1, right? And what is the a? So that a is nothing but the 4 pi r square, that q dot, area responsible for the conduction heat transfer. So minus k into what is the area? That is nothing but the 4 pi r square, 4 pi r square, ठीक है? सॉल्व इट, ठीक है? इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. q dot is equal to t1 minus t2 upon r2 minus r1 upon 4 pi k r1 r2. You will get the same mathematical expression. Differentiate it ना, इसको आप differentiate कर सकते हो. So differentiate it. After differentiating it, you will get the same mathematical expression. That q dot is equal to t1 minus t2 upon r2 minus r1 upon 4 pi k r1 r2. You will get the same mathematical expression, right? So this is the second method also, right? So from here also you will also get the same thing, right? और यहां से भी आपके पास from the second method you will also get the same thing. आपको सेम चीज मिलेगा, ठीक है? और यही चीज आप वहां पे भी देख सकते हो इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर आल्सो द सेम थिंग, ठीक है? यू कैन सी इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर आल्सो. वहां पे एक्चुअली मैंने बोला था कि वहां पे मैं आपको दो मेथड डिस्कशन करूंगा, बट समहाउ मैं भूल गया था, ठीक है? आई फॉरगेट द सेकंड मेथड. मैं मतलब सेकंड मेथड आपको बताना भूल गया था वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो यहाँ से भी आप चीजें देख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर. चलो, नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट. इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट. एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट? दैट एवरी बच्चा नोज, हर किसी को पता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट. कोई ऐसा बंदा होगा, बच्चा होगा जो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं जानता हूं, तो फिर भाई आप पुराने वीडियोस जाके देखो,
ठीक है, पुराने वीडियोस आप जाके देखो जिसमें मैंने इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर आई ऑलरेडी डिस्कस द इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, हाउ दिस कॉन्सेप्ट कम इनटू पिक्चर, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, राइट. मैंने इस चीज को ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है. सो लेट अस एज्यूम हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर हियर. यहां पे आपके पास लेट अस एज्यूम द हॉलो स्फीयर. Let us assume the hollow sphere. Right, so this is the hollow sphere. Right, and this hollow sphere has a thickness. This hollow sphere has a thickness. So first of all, radius. The radius is nothing but the hollow sphere. This radius is R1. This radius is R2. This radius is R1. And this radius is nothing but the R2. So what is the thickness? What is the thickness? The thickness. What is the thickness of the hollow sphere? The thickness is nothing but the R2 minus R1. This is the thickness, right? And this surface, inner surface is maintained at a temperature T1, and outer surface is maintained at a temperature T2, and definitely the T1 is greater than T2. T1 is greater than T2, right? And that hollow sphere is made of a material having thermal conductivity K. This hollow sphere is made of a material having thermal conductivity K. Having thermal conductivity K. This is the hollow sphere. This is the hollow sphere. So hollow sphere is made of a material having thermal conductivity, that is nothing but the K. That thermal conductivity is nothing but the K. Right. So this temperature is T1, this temperature is T2. So what is the rate of conduction heat transfer? The rate of conduction heat transfer, is nothing but the Q dot hollow sphere. Q dot hollow sphere. This is the rate of conduction heat transfer from the hollow sphere. Right. Now this hollow sphere is replaced by a plane wall. This hollow sphere is replaced by a plane wall. This hollow sphere is replaced by a plane wall. So this is the plane wall. This is the plane wall. Right, and what is the thickness of the plane wall? This is the plane wall. What is the thickness of the plane wall? The thickness of the plane wall is nothing but the delta. The thickness of the plane wall is nothing but the delta, right? And this area is nothing but the equivalent area. ये जो area आप देख रहे हो ना, this area is nothing but the equivalent area. This temperature, here the temperature is nothing but the T1. Here the temperature is nothing but the T2. Right? This plane wall is also made of same material. This plane wall is also made of same material as the hollow sphere, right? So this temperature is T1, this temperature is T2, thermal conductivity is same, also the thickness is also same, and also the rate of conduction heat transfer. To get the rate of conduction heat transfer same, what is this area? So this area is nothing but the equivalent area. This area is nothing but the equivalent area. राइट. सो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है. ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी चीज बताने की जरूरत है. राइट, बिकॉज प्लेन वॉल इज अ वेरी कॉमन केस. प्लेन वॉल इज अ वेरी कॉमन केस. राइट, सो प्लेन वॉल के केस में इफ आई वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, सो सिंपली आई से सर इट इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा बाई के. एंड व्हाट इज द डेल्टा? द डेल्टा इज नथिंग बट द thickness. What is the K? Thermal conductivity. And what is the A? That area which is normal to the direction of the heat flow. Right. प्लेन वॉल के केस में आपने यही पढ़ा है. एंड प्लेन वॉल इज अ वेरी कॉमन केस. राइट, सो इन केस ऑफ द hollow sphere, if you want to calculate the rate of conduction heat transfer, in case of the hollow sphere, if you want to calculate the rate of conduction heat transfer, so by using the concept of plane wall, you can easily calculate the rate of conduction heat transfer from the hollow cylinder also, for the hollow sphere also. राइट, लेकिन आपके पास इस चीज का ध्यान रखना है, वो जो प्लेन वॉल है एंड द hollow sphere. Right, plane wall and the hollow sphere is made of the same material. The temperature difference across the surface are same. Right, the thickness is same, and the rate of conduction heat transfer is also same. To get the same rate of conduction heat transfer, what is this area? So this area is nothing but the equivalent area. इसी area को हम क्या बोलते हैं? This area is nothing but the
equivalent area. This area is nothing but the equivalent area. So what is the equivalent area here? What is the equivalent area here? In case of the hollow cylinder, this equivalent area is nothing but the logarithmic mean area. In case of the hollow cylinder, this equivalent area is nothing but the logarithmic mean area. But here what is the equivalent area? यहाँ पे जो equivalent area है वो equivalent area आपके पास क्या होगा? Here what is the equivalent area? Right? So find out. ठीक है, find out किया जा सकता है, बिल्कुल find out किया जा सकता है. So अगर यहाँ पे in case of the hollow sphere, if you write the rate of conduction heat transfer, from the hollow sphere, so you can simply write T1 minus T2 divided by thermal resistance in case of the hollow sphere, right? And if you want to calculate the rate of conduction heat transfer from this plane wall, so you can simply write, sir, it is T1 minus T2, divided by thermal resistance in case of the plane wall, right? So this is the equation number A, this is the equation number B. So from A and B, ठीक है, that from A and B, that thermal resistance in case of the hollow sphere, that is equal to thermal resistance in case of the plane wall, right? So क्या मिल जाएगा आपको, देख लो, that thermal resistance in case of the hollow sphere is equal to thermal resistance in case of the plane wall, right? So this is simply R2 minus R1 divided by R2 minus R1, this is 4 pi K R1 R2 is equal to that thickness delta by K, na, delta by K. And what is the delta? The delta is nothing but the R2 minus R1 divided by the thermal conductivity K, and A is nothing but the equivalent area. Right? So R2 minus R1 चला गया, K से K चला गया. So ultimately what you will get? You will get the area A is equal to that equivalent area. That equivalent area is nothing but the 4 pi R1 R2, right? Now see, if inner surface area is nothing but the 4 pi R1 square, that inner surface area of the sphere, of the hollow sphere is 4 pi R1 square, and outer surface area is nothing but the 4 pi R2 square, right? Now multiplied by A1 and A2. If you multiply it by A1 and A2, then what you will get? You will get the 16 pi square R1 square R2 square. R1 square, if you multiply A1 and A2, right? If you multiply A1 and A2, right? So A1 A2 is equal to 16 pi square R1 square R2 square. So square root अगर आप लोगे दोनों साइड square root, so root over A1 A2 is equal to, that is nothing but the 4 pi R1 R2. So instead of the A, can I write, instead of the 4 pi R1 R2, shall I write A1 A2? So this is nothing but the equivalent area, na? This is nothing but the equivalent area. Right? And equivalent area किसके बराबर आ गया? What is the equivalent area? So this is nothing but the geometric mean. वहां पे क्या आया था? Logarithmic mean of A1 and A2. In case of the hollow cylinder, what you will get? In case of the hollow cylinder, आपको क्या मिला था? In case of the hollow cylinder, आपको मिला था logarithmic mean of A1 and A2. Here, this is geometric mean of A1 and A2. Geometric mean of A1 and A2, right? So here that equivalent area is geometric mean of A1 and A2. Here that equivalent area is geometric mean of A1 and A2. Getting my point? ठीक है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया? ठीक है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया? तो अब देखो, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, यू कैन कंपेयर आल्सो. ठीक है, एनालॉजी हमेशा रखिएगा. एनालॉजी से बड़ा आसान हो जाता है चीजों को याद रख पाना. ठीक है, एनालॉजी हमेशा रखिएगा. एनालॉजी से, ठीक है, चीजें आसान हो जाती है याद रख पाना. राइट? सो दिस इज द हॉलो सिलेंडर, hollow cylinder, and here that is hollow
हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। यस, स्फेरिकल ऑर्डिनेट जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, ये जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं उतनी ही चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर गेट एग्जाम मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डील नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशंस आपने लिया है, तो एजम्पशन से आपका जो आपके पास एनालिसिस है, दैट एनालिसिस इज सिंपल, फ्रॉम द एजम्पशन दैट एनालिसिस इज सिंपल, ठीक है। तो हमको सिंपल ही पढ़ना है, हमको इजी चीजें पढ़नी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी, ठीक है। और जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो किसको किसको, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, यू कैन कंपेयर दी हॉलो सिलेंडर एंड दी हॉलो स्फीयर, you can compare the hollow cylinder and the hollow sphere. So in case of the hollow cylinder, what is the temperature profile? In case of the hollow sphere, what is the temperature profile? Right, here the temperature is a function of, here temperature is a function of R, here also temperature is a function of R. So in case of the hollow cylinder, क्या था, T minus T1 upon T2 minus T1 is equal to natural log R by R1, natural log R by R1 divided by natural log R2 by R1, and here the T minus T1 upon T2 minus T1 is equal to, that is nothing but the 1 by R minus 1 by R1 upon 1 by R2 minus 1 by R1, 1 by R1, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ दैट वेरिएशन, हियर दैट वेरिएशन इज नथिंग बट द लॉगरिथमिक ना, हियर दैट वेरिएशन इज नथिंग बट द लॉगरिथमिक वेरिएशन, हियर द टेम्परेचर वेरीज लॉगरिथमिक एंड हियर द टेम्परेचर वेरीज हाइपरबोलिक वेरिएशन, हियर द टेम्परेचर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू आर, हियर द टेम्परेचर, दोनों ही केस में आपके पास टेम्परेचर आर के साथ ही वेरी कर रहा है। सो हियर the temperature varies with respect to R logarithmically, here the temperature varies with respect to R hyperbolically, right? अगर मैं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस, बिकॉज क्यू डॉट इज सेम यार, क्यू डॉट तो आप निकालना चाहते हो, सो क्यू डॉट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यू कैन कैलकुलेट द क्यू डॉट बाई दिस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर टी एच, हियर ऑल्सो यू फाइंड द क्यू डॉट डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर टी एच, बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द आर टी एच in case of the hollow cylinder, in case of the hollow cylinder what is the RTH, in case of the right hollow cylinder, in case of the hollow cylinder, hollow sphere, right? So in case of the hollow cylinder, in case of the hollow cylinder, what is the thermal resistance? So that is nothing but the natural log R2 by R1 divided by 2 pi k, natural log R2 by R1, that is the 2 pi, ठीक है। क्या आया था, ये आपके पास क्या आया था, in case of the hollow cylinder, natural log R2 by R1, that is a 2 pi KL, ऐसा ही कुछ आया था क्या, ठीक है, ऐसा ही कुछ आया था in case of the hollow cylinder, 2 pi KL, natural log R2 by R1 2 pi KL, in case of the hollow sphere, that is nothing but the R2 minus R1 divided by, this is 4 pi K R1 R2, 4 pi K R1 R2। कुणाल से इसकी सर, ठीक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर, राइट, यू कैन कंपेयर इन दिस वे, राइट, इवन दैट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन in case of the cylindrical coordinate system and in case of the spherical coordinate system, अगर आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को भी अगर आप कंपेयर करोगे, यू कैन कंपेयर जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, यू कैन ऑल्सो कंपेयर general heat conduction equation, you can also compare, right? General heat conduction equation, so this is the cylindrical coordinate, and that is the spherical coordinate, और सिर्फ आपको रेडियल वाला ही याद रखिएगा, ठीक है, वो लंबा चौड़ा जो मैंने आपको बताया ना, वो याद रखने का जरूरत नहीं है, जब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो याद रखने का मतलब क्या है,
उतना मतलब नहीं है याद रखने का, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एजम्पशन जो मैं ले रहा हूँ ना, वो एजम्पशंस, वो जो एजम्पशंस मैं ले रहा हूँ, व्हाट आर द एजम्पशंस, so एजम्पशंस आर कॉमन, right? What are the assumptions? So assumptions are common, and what are the assumptions? That first assumption is steady state जो आप लेते हो, first assumption is steady, second assumption is no internal heat generation, third assumption is nothing but the thermal conductivity is not a function of temperature, that fourth assumption is nothing but the one dimensional, and one dimensional that is in radial direction, ठीक है, radial direction. राइट नाउ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। नाउ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, राइट, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मेरे पास क्या है, देखो ये assumptions है। अंडर दीज assumptions प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडर दीज assumptions स्टडी नो इंटरनल हीट जनरेशन, थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड दी वन डायमेंशनल इन रेडियल डायरेक्शन ओनली, वन डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेडियल डायरेक्शन में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी दैट इज नथिंग बट द डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1 by r dt by dr is equal to 0, right? Here in spherical coordinate system, d square t by dr square plus 2 by r dt by dr is equal to 0। ये लो, बस यही तो था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। सिलेंड्रिकल पहले पढ़ा 1 है, स्फेरिकल बाद में पढ़ा 2 है, राइट। नाउ यहाँ पे अगर देखोगे, अगर इसको दूसरा फॉर्म में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 1 by r square d by dr r square dt by dr is equal to 0, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये लो, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 1 by r square d by dr and that is nothing but the r square dt by dr is equal to 0। देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ, राइट, आसान हो गया कि नहीं हो गया। देखो याद रख पाना आसान है कि नहीं है, याद रख पाना आसान है कि नहीं है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है, अंडर दीज assumptions, राइट। क्योंकि आपको सिंपल ही पूछता है, आपके एग्जाम में जो पूछता है ना, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिंपल ही पूछता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है, जस्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से जैसा आता है वैसा ही मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया है, ठीक है, जैसा आता है वैसा ही मैंने आपको कराया है। ठीक है, चलो तो याद रख पाएंगे, ठीक है। मैं बाकी वो जो शीट वीट वाला जो आप लोग बोल रहे थे ना, रजत से आई थिंक कोई भी बोल रहा था, जो भी मैं बोल रहा था, मैं आप लोगों को भेज दूंगा जो शीट आप लोग बोल रहे हो ना कि फॉर्मूला का पूरा कंप्लीट एक शीट, ओके, मेरे पास बना हुआ होगा, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर बाकी फिर कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे कंपोजिट स्फीयर, ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे कंपोजिट स्फीयर के बारे में, कंपोजिट हॉलो स्फीयर के बारे में, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस होगा पूछ सकते हो। यूट्यूब क्लासेस का टाइम टेबल सेम टाइम टेबल है, मॉर्निंग 7 to 8:30 सेम टाइम टेबल है। जयेश थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। Sir, if T2 is greater than T1, then the also temperature profile is hyperbola, and is there any concept of increasing or decreasing slope will be there? जनरली आपके पास, ठीक है, प्रोफाइल तो सेम ही बनेगा। अगर T2 आपके पास ग्रेटर है T1 से तो भी प्रोफाइल सेम ही बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। If T2 is greater than T1 ना, if T2 is greater than T1 then profile is same। शुभम, एक्चुअली मैंने कल मैसेज भी किया था शुभम, कल मैंने आपको मतलब ग्रुप में मैंने मैसेज भी किया था कि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, इसलिए कल डीपीपी मैं प्लान नहीं कर पाया, ठीक है। तो बट आज मैं डीपीपी प्लान करूंगा। आज डीपीपी है, यस डीपीपी आज है, ठीक है, यस डीपीपी इज देयर,
ठीक है, मैं आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है ना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स वाई डीपीपी वाज कैंसल्ड। रजत, होप आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम प्रोफाइल बनेगा यार, सेम प्रोफाइल आपका बनेगा। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई डाउट? श्योर, मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई कैन शेयर, बिल्कुल आई कैन शेयर। अनअकैडमी ग्रुप ऑल्सो आई कैन शेयर, अनअकैडमी ग्रुप ऑल्सो आई कैन शेयर। थैंक यू दीपक, थैंक यू। बस अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मेरा हेल्प हो पाएगा डेफिनेटली आई विल डू। बस आप लोग अच्छे से करिए। बताऊंगा शादाब, मैं सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, फर्क शादाब उसके लिए टेंशन मत लो, अभी तो मैंने आपको बताया ना। एक मिनट शादाब, आप क्या पूछ रहे हो? एक मिनट। आयुष जाके देखो, फुरियर फुरियर के एजम्पशन में था कि नहीं था। आयुष जाके देखो, आयुष जाके एक बार देखो था कि नहीं था। ठीक है, तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कोई पूछा ना क्या? फ्लूइड क्या पूछ रहा था यार, मैं फॉरगेट, क्या था क्वेश्चन? अरे कोई क्वेश्चन पूछा था ना, क्या फ्लूइड व्लूइड होगा करके कुछ पूछ रहा था। हाँ सर, अगर फ्लूइड हो एक साइड में, शादाब अगर फ्लूइड एक साइड में होगा ना तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक मेरे को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जैसे मान लो ये आपके पास हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के इस साइड में आपके पास फ्लूइड है। ठीक है, तो इस साइड अगर आपके पास फ्लूइड होगा, ठीक है, इस साइड में अगर फ्लूइड है तो आपके पास इन चीजों को कैसे डिस्कस करोगे? तो कल मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, कल हम डिस्कशन करेंगे कंपोजिट स्फीयर के बारे में। ठीक है, कंपोजिट स्फीयर के बारे में, हॉलो स्फीयर के बारे में वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, कल की क्लास में वी विल डिस्कस। ठीक है, तो वो सारा चीज हम अच्छे से समझेंगे उन चीजों को। ठीक है। हाँ, डीपीपी वैसे इवनिंग में ही रहता है, 9:30 इवनिंग, मतलब मेरा तो रात को ही रहता है यार डीपीपी, इवनिंग में नहीं, रात को रहता है। 9:30 टू 10:30 मैं वही डीपीपी प्लान कर सकता हूँ, 9:30 टू 10:30। आप कर ले सकते हो। ठीक है, मैसेज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल मैसेज कर लिया करो, वॉट एवर द डाउट यू हैव ना, वॉट एवर द डाउट यू हैव। हाँ, रात में ही बताया ना मैंने, 9:30 टू 10:30 मैं अगर डीपीपी प्लान करूंगा, इफ आई एम प्लानिंग फॉर द डीपीपी, सो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज 9:30 पीएम टू 9:30 पीएम ओनली। और 10:30 और 11, 9:30 टू 10:30 और 11 मैं इवनिंग में ही प्लान कर, मैं मतलब रात में ही प्लान करूंगा। ठीक है, क्योंकि डे में भी मेरे पास और भी थोड़ा शेड्यूल रहता है, हेक्टिक हो जाता है, राइट। सो मैं अगर प्लान करूंगा तो आपके पास 9:30 पीएम टू 10:30 और 11 ही प्लान करूंगा। ठीक है, अरविंद यू कैन मैसेज मी पर्सनली, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉट एवर द डाउट यू हैव ना, अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा और अगर आपको लगता है कि मैसेज करना चाहिए, यू कैन मैसेज मी पर्सनली इन टेलीग्राम इटसेल्फ, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, सो चलो फिर बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, सो बट बिफोर एंडिंग द क्लास, क्लास एंड करने से पहले, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ बिफोर एंडिंग द क्लास। जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो इंगेज हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी नाउ डेज, ऑब्वियसली दैट अनअकैडमी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकली आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली, ठीक है, आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और स्पेशली गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, बिकॉज जो भी आपके पास जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं सब आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, राइट। आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, वंस यू गेट दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप जिनसे पढ़ना चाहो आप पढ़ो, इट्स अप टू यू। आपको मेरे से अच्छा लगता है आप मेरे से पढ़ो, ठीक है, जिनसे अच्छा लगता है आप जिनसे भी अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट भी चल रहा होगा, रनिंग सब्जेक्ट जो भी होगा, जिनसे आपको लगता है पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ऑल टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल हियर, राइट। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हो, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज द प्लस सब्सक्रिप्शन, अनदर वन इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। One is the plus subscription, another one is the iconic subscription. So in plus subscription what you will get the live classes, obviously live classes का आपके पास ऑप्शन है।
लाइक नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज यू कैन इंगेज, लाइक लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज आप इंगेज कर सकते हो, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज यू कैन इंगेज, ठीक है, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम रहता है कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, आप वहां पे कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली देयर इज अ स्ट्रक्चर शेड्यूल, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट्स, और क्या चीजें आपको मिल सकती है, ठीक है, सो आइकॉनिक बैच में आपको क्या चीज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन वाला जो आपके पास, जो मैंने आपको बताया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली दैट पर्सनल कोच इज देयर, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस पार्ट इज कवर्ड, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस पार्ट आपके पास कवर होगा। सो अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस को, तो डेफिनेटली, ठीक है, ये आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है, राइट। प्रॉपर वे में स्टडी प्लानिंग एंड ऑब्वियसली देयर इज अ एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये भी आपको मिलेगा, राइट। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली दैट इज मोर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन। आप प्लस अफोर्ड कर सकते हो, प्लस करिए, अगर आप आइकॉनिक कर सकते हो तो आइकॉनिक कर सकते हो, राइट। और एक चीज और, ठीक है, 1920, ठीक है, आपके पास हो सकता है आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि आपके पास अक्टूबर, ठीक है, मे भी हो सकता है कि अक्टूबर में आपके पास क्या होगा, आपके पास जो फी है वो हाइक हो, मे भी हो सकता है आपके पास जो फी है वो आपके पास हाइक होने वाला है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, राइट। सो बिफोर हाइकिंग ऑफ प्राइस, ठीक है, हाइक होने से पहले अगर आप, ठीक है, प्लान करना चाहते हो सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास प्राइस अगर प्राइस हाइक होगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर द सेम सब्सक्रिप्शन, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हो, दैट मोस्ट पॉपुलर प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो फॉर द 12 मंथ, ठीक है, ये आपके पास सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो CHA10, दिस इज माय प्रोमो कोड CHA10, इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोमो कोड CHA10, तो आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट इज 20,500 रुपीज। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो, इफ यू आर गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो मेरा CHA10, राइट, CHA10 इज माय प्रोमो कोड, रिमेंबर, ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 40,500 रुपीज, इतना आपको पे करना पड़ेगा फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। सो यहाँ पे अगेन, ठीक है, आपके पास डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन यू हैव, ठीक है, डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, ऑब्वियसली EMI ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। सो नो कॉस्ट EMI आपके पास अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा EMI का, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, UPI के थ्रू आप पे कर सकते हो, राइट। एंड रिमेंबर, अगर आप प्रोमो कोड यूज करोगे CHA10 तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और वो डिस्काउंट पढ़ने के बाद अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आपको कितना पड़ेगा, 20,500 रुपीज, राइट। एंड दिस इज अबाउट द फेसबुक ग्रुप, ठीक है, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, जाके आप सर्च करिए गेट एस्पिरेंट्स के नाम से फेसबुक ग्रुप। सो गेट एस्पिरेंट्स के नाम से वो फेसबुक ग्रुप है, ज्वाइन करिए, ठीक है, आपको बेनिफिट ही होगा, जो भी नोटिफिकेशन आता है वहां पे आपको दिख जाएगा, जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है यू कैन सी ओवर देयर, राइट। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वी विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।